I don't know. No, I want to present next to them. I'm from JU, so it's on the left. Oh, both of us are. That's it. Yes. You are rightly left. Good evening again, and welcome to the closing ceremony of our two-day conference. Our theme, Navigating Social Landscapes and Exploring Contemporary Issues in the Social Sciences. Over the past 2 days, on March 5th and 6th, 2024, we have embarked on a stimulating journey together, delving into the complexity and nuances of the social world around us. We have had the privilege of engaging with insightful presentations, thought provoking discussions, and lively debates, book discussions as well, all centered around the theme of navigating the intricate landscapes that make up our society. Now, I would like to invite our guest of honor, Justice Sudhir Agrawal, former judge of the High Court of Judicature at Allahabad. No, but currently also, please tell who is the judicial member of NGP. Now, I would like to invite our guest of honor, Ms. Asha Bhadoria. She is a visionary leader who has tirelessly worked towards enhancing the lives of military personnel and their families. With a commitment to excellence and a heart for service, she has exemplified leadership and dedication in the realm of military welfare. Today, we are honored to have her with us to share. Yeah. So thank you so much, and our team is doing a great work. So first of all, this is a valedictory session of the International Conference on Social Sciences, and we are very fortunate to have very esteemed guests with us today on the dais. And I would like to request Professor Dr. Nirupma Prakash to welcome the and address the valedictory session and all the guests those who are on the dais. Thank you. Thank you. Well, I had to intervene because such important guests, and we cannot start the proceeding without welcome. So I am Nirupma Prakash, Professor and Director, Amity Institute of Social Sciences. And here with the gratitude of Honorable Founder President Sir, Dr. Ashok K. Chauhan, our very dynamic Chancellor, Dr. Atul Chauhan, our respected Vice Chancellor, Professor Dr. Balvinder Shukla, very, very distinguished guests on the dais, the delegates, advisors, deans, heads of institutions at their respective institutions, faculty and dear students. It's my proud privilege to welcome you all to the valedictory session of the International Conference on Social Sciences on the theme Navigating Social Landscapes, Exploring Contemporary Issues in the Social Sciences, held during 5th and 6th of March 2024. This conference has been organized in collaboration with the Indian Social Science Association, Association of Professional Social Workers in Uttar Pradesh, and Kailash Satyarthi Children's Foundation. Renowned scholars have participated from all over India, including the IITs, IIMs, various central universities from various states. Also, participants from Sri Lanka, Singapore, Austria, they have presented research papers in the hybrid mode. The deliberations have been set forth with very scintillating and very informative panel discussions, which have mainly have been held on the following areas, that is child marriage in collaboration with Kailash Satyarthi Children Foundation, empowering women and children in the digital age in collaboration with the Center for Social Research, women entrepreneurs in collaboration with Women's Collectives, global social development and youth with international participants from Myanmar and Burmese and Afghanistan in collaboration with Bosco, social work in dynamic era, paving the way for Viksit Bharat, Indian knowledge system, revisiting Bharat in Amritkal, NGO Leaders Forum with NGO heads and panelists from Andhra Pradesh, Assam, Rajasthan, Odisha, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Delhi. And this objective of analyzing various
societal nuances, and the impact on social development through all of these multidisciplinary, cross-disciplinary approach has been the strong forte of this conference, in addition to establishing, forging linkages and collaboration with various agencies and organizations. So definitely and truly, this conference will help us in opening a dialogue between all disciplines of social sciences. Amity Institute of Social Sciences presents very proudly various disciplines in terms of social work, sociology, political science, history, geography, philosophy, development studies, and all other disciplines running at the university, whether psychology or economics and so on, where some of it has been touched in each of the panel discussions. So once again, a very warm welcome to the distinguished dignitaries on the dais and all the delegates. And I congratulate the convener, Dr. Prashant Chauhan, the organizing committee, and the very dedicated student volunteers for making this. Thank you. Now, I would like to invite the convener of the conference, Dr. Prashant Chauhan, to shed light on the valedictory session. Yeah, so before giving the brief of the conference and all, I thought because the Honorable Justice is here and Asha Bhadoria ji ma'am is here and obviously our Pam Jam Dr. Anand Raghunathan sir is here and all the Neera Mishra ji and our director ma'am. So I'm just taking a few minutes in between that how this conference came into and how we have made this panel. And already Nirupama ma'am has explained all the panel details. So basically, Amity Institute of Social Sciences is having various programs in our and streams and then we planned that we should have a conference, a platform in which we can invite all the researchers, the scholars, and practitioners and academicians in one platform, so that what new things are coming, what are the contemporary issues happening, that we can figure out and we can take forward further research and publications in this regard. So we had a lot of sessions. We had in the morning session book release also, book discussion, and a wonderful session you just finished. We had session on social work also, and yesterday we had various panels, NGO Leaders Forum. So I was, when I was speaking to Honorable Justice, so he was saying, what is this all about and what I have to speak, because currently he is serving as a member of the National Green Tribunal, and environment is one area which is on priority for all of us actually. When we talk about social sciences or any social issue, so environmental issue is something where if we exist, then it's something it will happen. And as far as I know about, if I say Asha Bhadoria ji is, a great human being and very active lady and always very interested in talking to students and working on social issues. So when I spoke to her, though she was engaged in some personal family function, and in the morning she came, and then afterwards she's here. So I appreciate actually that you are here, and we had a variety of things. So not taking much further, so that I'm not coming in between. And already the session was here, and maybe Dr. Anand, we will request you to speak now valedictory session may also. So apart from that, so I'm just taking your permission. And so in between, Asha ji was saying I don't want to have not prepared anything as such, but I know that when she will share her perspectives, so definitely it will be very helpful to students.
So may I Can I request? say something about Asha ji? She is a great friend of mine. She has been the president of the Air Force Wives Association, and she has done wonderful work with the, the women in the Air Force and the wives of the, the lower category officers there. Plus, she has started her own NGO, which is Parivar Ki Pahel, and and she has done so much of work in recycling waste, creating very beautiful products which can be used in homes, and also some people can take it up as a hobby or as an entrepreneurship. So she's a very talented friend of mine, and I'm so happy to be here with her. And so she has so much to say. She can share her knowledge here. थैंक्स सॉरी मैं प्रिपेयर नहीं होके आई थी उन्होंने बताया भी नहीं था कुछ डोंट वरी मैं मेरा रिसाइकिल का है आई एम डूइंग ओल्ड सामान को नया कैसे किया जाता है एंड इको फ्रेंडली एंड खाद का भी जो घर में जो वेस्टेज होता है उसको आई नेवर थ्रो बहुत सालों से आई एम डूइंग एंड मेरे घर में 10 kg खाद निकल जाता है अपना वेस्ट जो वेट वाला होता है उसको रख के जो हमारी सब्जी वगैरह का जो भी बचता है एंड बाकी मैं गनी बैग से बहुत सारी चीजें बनाती हूँ आई होप यू लाइक इट कभी एक सेशन करेंगे यहाँ पर आपको दिखाएंगे अपना करके तब पता चलेगा आपको क्योंकि अभी बताने से नहीं होता जब तक आप नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट Yeah, I think when she was telling, it was very simple. Normally the kind of stature she has, she can establish a very big organization and she can have a fanfare thing. But she's very humble and she started with her own, initiative. And I think this is a message that as an individual we should initiate first. Rather, we should have something where we are showcasing our work and doing less individually. So I think very appreciating, ma'am, that you are doing this. And I think Honorable Justice is here and he will speak on environmental aspect because currently the role he is into. And after that, I also want to, request Ms. Neera Mishra in the end as a valedictory session if she wants to say quickly in some 5-7 minutes about futuristic because Neera ji is continuously working, and I can say that one lady, if I have 10 women or ladies, so she is one of them on which I learnt a lot. So she is the one who I really admire, her passion and interest and continuous work for society, for others. So Neera ji, if you can just come here. Yeah, thank you. So thank you प्रशांत. जैसे मैं बताना चाहूंगी कि प्रशांत को मैं ऑलमोस्ट 25 साल से जानती हूँ और इसने मेरी जर्नी देखी है. My whole objective in life from childhood was what I had seen in my family. कहते हैं आपके संस्कार आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं. तो हमारी फैमिली में एक बड़ा it was a अनरिटन स्टेटमेंट कि कभी भी कोई मदद के लिए आए या कभी किसी को दुविधा में देखो तो उसके आगे हाथ बढ़ाओ. I had seen my grandmother doing it. I had seen my parents doing it. In fact, once I heard my father saying कि उनको पता नहीं चले कि मैंने भेजा है मुझे, लेकिन मालूम है कि वो प्रॉब्लम में है, उनको इतने पैसे का मनी ऑर्डर पहुंचना चाहिए. तो एक वो भावना थी. फिर हम कैलकाटा में बड़े हुए. कैलकाटा में जो मैंने दुविधा देखी, it was terrible. I think there the people were kept in poverty, deliberately kept in poverty. तो हम लोग स्कूल से बच्चे जाते थे, we used to collect medicines and food. तो वो एक तरह का एक डीएनए में एक वो बना. आज सुबह मेरा एनसीसी के साथ यही डिस्कशन हो रहा था, why are you into social service? Then I thought कि अगर मुझे कुछ सचमुच चेंज लाना है, you have to structure yourself. So I was chosen to be an entrepreneur by SIDBI. I have done business administration. I've done MA in English with
political science from a place in Calcutta, so you can imagine that वो था ना एक तड़प थी कि कुछ करना है, but not the Marxist way, not the left way, not the JNU way. क्योंकि घर का संस्कार बिल्कुल different थे. I did not understand the history that I was taught in school, and I always wondered why 4,000 years history is not taught to us. Why 600 years of history is, 600 years of history is taught to us in such great detail, things like that. So मैंने एक trust की, I think it was, frankly, it was by accident, literally by accident. I had an accident on Jaipur highway. मुझे पापा ने कहा जाके पूजा करके आओ कपिल वासिनी मंदिर में, एंड मैं पूजा करने गई. वहां पे मैंने आर्कियोलॉजिकल साइट को देखा. इट वाज इन अ मेस फिनिश. तो मैंने वो साइट देखी कि nationally protected site of Archaeological Survey of India under Ministry of Culture is lying in tatters, where crores and crores are being spent on qabristans in Delhi. तो कुछ करना चाहिए. प्लस वहां के लोगों की दुविधा देख के इतने रिसोर्सेज, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, नॉलेज रिसोर्सेज, उस एरिया में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ, वहां द्रौपदी महारानी का जन्म हुआ है, वहां पे कंपिल वासनी का, मतलब इट वाज अ लैंड कॉल्ड ऑफ लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल किंग्स. तो मैंने इसके लिए स्ट्रक्चरिंग करी, एंड आई स्टार्टेड माय एनजीओ व्हिच वर्क्स ऑन टू वर्टिकल्स, knowledge and skill empowerment, and also creating better understanding and appreciation of ancient civilization, culture and history. And इस दौरान मैंने हजारों एनजीओस के साथ काम किया है. And today the 20 years मेरा एक छोटा सा अचीवमेंट ये है that the national level NCC has tied up with our NGO, because हमने ये देखा 30 साल में यमुना खत्म होती जा रही है. यमुना में यमुना का पानी नहीं है, यमुना में नल्ला का पानी है. So what can we do about it? तो हमारा एक अभियान है, आप लोग जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा. But yes, I just want to tell you one thing, that I was trained as an entrepreneur and converted into a social entrepreneur. Entrepreneurship में ये होता है, you learn to do things, and if you fail, never be disheartened, learn to fail fast. And the more you learn, the more you fail, the more stronger you should get, because experience is the name we give to our, like failure को ही हम अपना experience बोलते हैं. So we have to, the name to our mistakes is experience. So learn from your mistakes and always be open to opportunities, to new opportunities, so that you are able to harness them. Keep your mind open. In entrepreneurship we were taught कि 4 projects लेके चलना when you start your project report. पहला फेल हो डिसअपॉइंट मत होना, दूसरा फेल हो डिसअपॉइंट मत होना, तीसरा शुरू करते करते इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा कि इसके फेलियर के लिए तुम प्रिपेयर्ड भी हो सकते हो या ये एक सक्सेस हो सकता है, और फोर्थ के लिए तो यू विल बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड. So I was trained by DST, Department of Science and Technology, chosen by SIDBI in 1995, and in terms of my work, I have done the launch of first international car, Jopel Estrop, General Motors in India. I've done France 98 World Cup All India promotions for Gillette. So बहुत projects करे, लेकिन जो मुझे कहना चाहिए satisfaction आया is when I started my trust. I was a governing body member in FICCI for 7 years. I was giving 4 hours free service, training other women in being an entrepreneur. So that kind of attitude you have to build कि society का, भगवान का, प्रकृति का एक नियम है. आप ऊपर अगर फूल भेजोगे तो आपके ऊपर फूल गिरेगा, आप अगर कुछ भी बोलोगे दुनिया राउंड है वो आपके पास आएगा. इसलिए think positive, do positive, and always you will be successful if your mind is and attitude are positive. I will not take too much time because these are lectures that can go on, but I'm very grateful that this is a great opportunity that you have such renowned personalities like I would like to say a few words about justice. Agarwal ji also, I've had the privilege and blessings of Krishna to be connected with him. He presented me my award in a place called Itawa in UP on my work on Mahabharat history, and from that time I know him. He went deep into the history of Ayodhya, got the Ayodhya Mahatma out, understood the background, and then how he worked background out of the court with the 2 parties to give the famous judgment
which actually led to the re-excavation of Ayodhya, and we come to know today the reality. So these are people, Anand Ranganathan ji, he goes deep. I mean, he's a pure scientist. He goes deep into the matter, and then that's how we have to, in whatever field we are, whether you're doing social work, whether you're becoming a scientist, or in geography. Somebody was asking a geography question. Let me tell you, when I was doing research to showcase that Mahabharata is history, I took the route of geography, because हमको हिस्ट्री जानने के लिए ज्योग्राफी जानना भी जरूरी है. तो ज्योग्राफी के द्वारा मैंने पूरा मैपिंग करी है. इफ यू गो इनटू माय बुक यू विल सी द टूर टेकन बाय कृष्णा, द रूट्स टेकन बाय द पांडवस across. We have mapped it visually so that you understand. तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ये सब हमारे पूर्वजों की हमारे लिए देन है. तभी मैं कहती हूँ भारतीय ज्ञान विज्ञान है, और उस ज्ञान विज्ञान को अगर हम हासिल करेंगे तो हमें अपने आप ही वो भावना आएगी कि हमें समाज के लिए. आई वुड लाइक टू एंड अगेन विद व्हाट डॉक्टर रंगनाथन स्टार्टेड विद, वासुदेव कुटुंबकम. हमको सबको, प्रकृति को, पेड़ को, जानवर को, इंसानों को, अपने आप को जब हम एकजुट पाएंगे कि ये जैसे कि आई टेल यू वन वेरी सिंपल स्टोरी, लास्ट पॉइंट. श्री कृष्णा जब यहाँ आए, एक हमारा रिचुअल मेंशन्ड है कि श्री कृष्ण ने विवाह करा था किससे? कालिंदी. बेसिकली हमारे यहाँ विवाह का मतलब ये होता है हम एक दूसरे का संरक्षण करेंगे. ही आइडेंटिफाइड यमुना, ही टुक दैट पॉइंट एंड ही सेड कि हम आपकी संरक्षण करेंगे, आप हमारे इंद्रप्रस्थ की रक्षा करें, आप हमारे इंद्रप्रस्थ को सींचना. सो दिस आइडिया ऑफ having the knowledge of thinking the way our seers thought about our country, about the world. हम सिर्फ भारत में जब हम संकल्प लेते हैं, हम कहते हैं भारत खंडे इंद्रप्रस्थ, जम्बू द्वीपे कहते हैं ना. we start with a काल, you know. So वराह कल्पे भारत खंडे, जम्बू द्वीपे भारत खंडे. तो हमको पूरा विश्व हमारा है, हम पूरे विश्व के हैं. हम अपने तरफ से विश्व के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप दूसरे के लिए 2 कदम चलोगे, आपके साथ 10 लोग चलेंगे. So do good, think well, think positive. We have an attitude that I am in service, whether you're a working person or a non-working person, I am in service to the nation, and that is how मेरे पास अपने आप ही सब कुछ आ जाए. Thank you, ma'am. We are indeed grateful for your insights. Now, I would like to call Dr. Anand Ranganathan, scientist, author, and political analyst, for his valedictory speech. Thank you very much once again to the organizers for having me here. It's a wonderful event. And of course, I was forewarned by Prashantji that I might have to say something. And in the last 10 minutes, I have been doing my research. And I have found out that the Honorable Judge is, first thing, is he still active as a judge? Or because if he is, then I would not be able to say the kind of things I want to say about his field. So I am absolutely certain that the judge will not convict me for what I am going to say. If he does, I would ask for a few lawyers out here who are budding lawyers to please help me. There already was a criminal contempt of case against me that went on for 5 years for my standing up for freedom of speech of someone, and thankfully J. Sai Deepak helped me win that case. So I'm very thankful to him. And of course, to Honorable, he's an absolute legend, and I've known so much about him. So even if you, sir, do not like what I have to say, please forgive me. But, you know, we've castigated politicians day and night. Even today, in what I said, we castigated politicians. Yes, they deserve all our outrage and fury. But the fact of the matter is that politicians are not going to change. They are never going to change. Because what matters to them at the end of the day, 99% of the time, is just to win an election. That 1% is to do good for the country. I'm sorry, I might be considered as being a little bit too cynical, but it is better to err in being more cynical than being less. What troubles us more, or what should trouble us more, is the morass and corruption in the judiciary.
and again I distance myself a little bit away from the honorable judge, because if the field of politics is troublesome and it cannot be corrected, the tragedy is that the domain of judiciary can be corrected. But who is going to stand up to correct that? It is people like Honorable Justice Agarwal that we require hundreds of them to correct it. You don't believe me? Let me give you just the stark data, and you will realize that the wheels, or as they say, the wheels of justice are not just grinding slowly. In our country, they have come to a halt. And it is the only hope of this country is the judiciary. Trust me, even though it is crumbling still, the only. But 50 million cases are currently pending. It crossed 50 million. That's more than the population of South Korea. 38% of the High Court judges' positions are lying vacant. 21% of all judicial positions are lying vacant. 76% of the prisoners in our country are under trial. That means they haven't had their justice. Either they are convicted or acquitted, but they are just languishing in jails. They are under trial. 76% of our prison population. I can go on and on. India has only 20 judges per million population. America has 200. Where is the justice in this country? Where is it? And I want to ask this because politicians cannot be corrected, but justices can. Judge can. Justice is the most sacrosanct and the greatest invention of man. Animals do not mete out justice. Humans do. It should be our fundamental right. But the problem is, you look at other data. Out of a total of 50 million pending cases, 182,000 cases are as old as 30 years. As many as 2,44,001 pending cases are of child and sex offenses. So I ask you, yes, all of us must be aware of the morass in politics and we must vote to elect great politicians. Long may we cherish the day might come. But the problem at hand that can be corrected is not of politics, but is of judiciary. Thank you so much. Thank you so much, sir. Your humor is what we live for. Can we have a huge round of applause for Dr. Anand Ranganathan? Next, I would like to introduce our guest of honor, Justice Sudhir Agarwal. Former judge of the High Court of Judicature at Allahabad, Justice Sudhir Agarwal gained renown for his pivotal role in delivering several landmark judgments, including the Ram Janam Bhoomi. Over his illustrious career, he addressed diverse legal issues, including environmental cases like Ganga pollution, illegal mining, and unauthorized constructions. Notable for his diligence, Justice Agarwal decided over 1,40,000 cases across various jurisdictions during his tenure, leaving an indelible mark on civil, criminal, service, constitutional, rent, tax, and environmental law. We're really grateful to have you, sir. Can we have a huge round of applause for Justice Sudhir Agarwal? First of all, a very warm good afternoon to you. Now we are on the other side of the afternoon. In the last 2 days, the discussions and the sessions you have had, I think every aspect of social science must have been discussed and covered. And in the valedictory sanction, when virtually as a last speaker I come, the fear I have is whether I am repeating the things or not. It is really a trauma for the last speaker always. मैं आपको एक प्रैक्टिकल और सच्चा उदाहरण बताता हूँ. एक ऑनरेबल हाई कोर्ट जज थे जो सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिवेट हुए थे, तो बार एसोसिएशन ने उनको फेयरवेल देने के लिए बुलाया.
अब उन्होंने सोचा फेयरवेल में थोड़ा तो बोलना ही पड़ेगा, तो वो क्या बोलना पड़ेगा ये नहीं मालूम था, तो जो उनका थोड़ा एक्सपीरियंस था वो 4-5 पेज में लिख के ले गए। जब फंक्शन शुरू हुआ तो सबसे पहले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कुछ बोला, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो बोला है, उनके जो राइटअप लिख के लाए थे उसके 4-5 पैराग्राफ तो ऑलमोस्ट वही थे, तो उन्होंने उनको काट दिया कि भाई अब मेरा इनको बोलना ठीक नहीं रहेगा। उसके बाद 3-4 और स्पीकर आए। अल्टीमेटली जब उन्होंने सब स्पीकर के दो दो जो पैरा मिल रहे थे काटे, तो पता चला 2 पैराग्राफ बचे उनके लिखे हुए। तो फिर उन्होंने खड़े होके उसको तो एक तरफ रख दिया और उन्होंने कहा भाई अब मैं अपने जनरल तरीके से जो समझता हूँ वही बोलता। तो ये ऐसा होता है। मैं थोड़ा मोनोटोनी आप लोगों की इसलिए तोड़ रहा हूँ कि आप लोगों ने सारे लेक्चर्स इंग्लिश में सुने होंगे। अब मैं जब कोर्ट से बाहर निकलता हूँ और बोलता हूँ तो मैं हिंदी में बोलना प्रेफर करता हूँ, और वो इसलिए मैं उसका रीजन भी बताना चाहता हूँ। हम लोगों की, ज्यादातर लोगों की मदर टंग इंग्लिश नहीं, तो होता क्या है जब इंग्लिश में बोला जाता है तो हम लोग पहले इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तब समझते हैं, तो कुछ सेकंड का गैप हो जाता है, लेकिन जब हिंदी बोली जाती है तो सीधी दिल में उतर जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोशल साइंस का सब्जेक्ट या मैटर बहुत वाइड है। ह्यूमन रिलेशन, बिहेवियर, सोसाइटी, एवरीथिंग इज कवर्ड। और जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज कवर्ड है इसमें, वो है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। और मुझे ये बताया गया कि जो आपके जो भी स्पीकर्स वगैरह आए, उन्होंने थोड़ा एनवायरनमेंट पे कम बोला या शायद नहीं बोला, तो मैं आपको उसी की तरफ लेके चलता। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरमेंटल लॉज अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में, सबसे पहला एक्ट वाटर पॉल्यूशन का 1974 में बना। तो क्या इससे पहले एनवायरनमेंट का कोई लॉ नहीं था? और वो भी क्यों बना था कि 1972 में स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशंस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ। पहली बार ये महसूस किया गया कि पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी बहुत सीवियर होती जा रही, बहुत गंभीर होती जा रही, और इसको तुरंत अटेंड करने की आवश्यकता है। तो स्टॉकहोम में एक बड़ा रेजोल्यूशन पास किया गया और उसमें सारे मेंबर कंट्री, जिसमें भारत भी एक सिग्नेटरी था, ये तय किया गया कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए और आवश्यक हो तो इसके लिए कानून भी बनाए जाए। क्योंकि इंटरनेशनल रेजोल्यूशन हो गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि अगर इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस होते हैं तो उनको इंप्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार अलग से कानून बना सकती है। और उस कानून को बनाने के लिए उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेड्यूल 7 में जो लिस्ट दी है, लिस्ट 1, 2 और 3, उस पर डिपेंड किया जाए। वो लिस्ट 2 जो स्टेट लिस्ट है उस पर भी कानून बना सकती है अगर वो इंटरनेशनल लॉ से गवर्न या इंटरनेशनल रेजोल्यूशन, ट्रीटी वगैरह से। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले, क्योंकि आपने सुना होगा, ये बात बहुत दिनों से चली आ रही है कि अगर कभी अगला विश्व युद्ध हुआ तो पानी के लिए होगा। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। तो सबसे पहला जो कानून बनाया गया वो पानी को पॉल्यूशन से बचाने के लिए बनाया गया, लेकिन उसकी डेफिनेशन में, स्ट्रीम की डेफिनेशन में लैंड को भी इंक्लूड किया गया। यानी पानी का मतलब सिर्फ सरफेस वाटर नहीं है, ग्राउंड वाटर भी है और लैंड भी है, क्योंकि लैंड से भी अल्टीमेटली पानी नीचे जाता है और ग्राउंड वाटर में जाता है, उसको गंदा कर देता है। लेकिन ये 74 का जो एक्ट बना, ये बहुत इनएडिक्वेट साबित हुआ, इससे कुछ नहीं हो पा रहा था। दूसरी बात है कि एनवायरनमेंट के मामले में हम लोग उतने अवेयर भी नहीं थे और कॉन्शियस भी नहीं थे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एनवायरनमेंट और माई एनवायरनमेंट में क्या फर्क है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे माई एनवायरनमेंट? कोई बता सकता है? एनवायरनमेंट तो आप सब जानते हैं, हवा, पानी, धरती, धूप।
लेकिन माई एनवायरनमेंट क्या होता है? आप ये भी बता सकते हैं कि साहब एनवायरनमेंट दो तरीके का है, ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट। मैन मेड एनवायरनमेंट जो हम घरों में, सोसाइटी में अपने लिए बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, वो भी एक एनवायरनमेंट है। जैसे कहते हैं ना, किस एनवायरनमेंट में पला बड़ा है बच्चा, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन हम यहाँ कंसर्न है ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट के। हम क्या समझते हैं, ये एनवायरनमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं, ये तो सबकी चीज है, और जो सबकी चीज है वो किसी की नहीं। तो माई एनवायरनमेंट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब हम में ये भावना आ जाए कि ये एनवायरनमेंट भी मेरा है, और जैसे मैं मैन मेड एनवायरनमेंट जो मेरे घर में लागू होता है, मेरे कॉलोनी में लागू होता है, मेरी सोसाइटी में लागू होता है, अगर मैं ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट के लिए भी वही भावना, वही प्रयास लगा सकूं, तो जो परिवर्तन आप अपने घर में या सोसाइटी में कर पाते हैं, वो ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट के लिए भी कर सकते हैं। ये फर्क है। तो दिक्कत क्या थी, हम माई एनवायरनमेंट तो जानते ही नहीं थे। हम सब लोग तो सिर्फ एनवायरनमेंट जानते थे, इसलिए अनकंसर्न थे। हमें कूड़ा घर से निकाल के और सड़क पे फेंक देना है, नदी में डाल देना है, घर में साफ पानी पीना है, बाहर का पानी कितना गंदा है इसे चिंता नहीं, साफ पानी घर में आता है, कितना वेस्ट हो रहा है कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये तो मानते हैं तो ईश्वर की देन है, इसको बर्बाद करने में क्या फर्क पड़ता है, वो तो ईश्वर का काम है, वो ठीक करेगा। लेकिन ईश्वर भी अपना काम हमारे आपके द्वारा कराता है। तो वाटर एक्ट को इनएडिक्वेट समझा गया पर्यावरण को बचाने के लिए, तो फिर एयर एक्ट, एयर पॉल्यूशन एक्ट को जो है, प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन है, 1981 में दूसरा कानून बनाया गया, लेकिन वो भी सबको कवर नहीं करता था। तो लेजिस्लेचर ने एक अच्छा तरीका सोचा, उन्होंने छोटा सा एक्ट बनाया, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एक्ट 1986 में, 1986 में। और वो इसलिए छोटा सा है कि उस पर ज्यादा प्रोविजन नहीं है, उसमें सारी शक्तियां भारत सरकार को दे दी कि पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जब भी जो जरूरत हो, वो जैसी जरूरत हो वैसी अथॉरिटी क्रिएट कर सकती है, वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कहलाएंगे, और वैसे डायरेक्शन इशू करता है, वो स्टैट्यूटरी डायरेक्शन कहलाता है। तो वर्चुअली हम ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से मेजर वे में आज की तारीख में गवर्न हो रहा है। हालांकि इसके बाद में बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी आया, लेकिन वो उतना अभी लागू नहीं है, मतलब उतना लोग उसके बारे में जानते भी नहीं। अब एनवायरनमेंट में एक्चुअली क्या है, देखिए जैसे मैंने कहा, ये एनवायरनमेंट का कंसेप्ट सिर्फ यूएनओ रेजोल्यूशन ने हमको नहीं सिखाया, हमारे वेदों में लिखा है। अगर आप पुराने, हजारों साल पुराने वेद ग्रंथ पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, स्मृतियां पढ़ेंगे, तो एनवायरनमेंट को हमारे पुरखों ने अपने फैमिली का, अपनी सोसाइटी का हिस्सा माना। उनको उन्होंने पारिवारिक टर्मिनोलॉजी दी, दैविक टर्मिनोलॉजी दी। जैसे धरती को हम माँ कहते हैं, नदियों को हम माँ कहते हैं, वृक्ष को हम पिता तुल्य मानते हैं, आसमान को, हवा को हम देवता तुल्य मानते हैं। ये इसलिए किया गया ताकि ये ग्रेट रेस्पेक्ट हम एनवायरनमेंट के को दे सकें। तो जब हम उनको रेस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, तो उनकी सुरक्षा भी करेंगे, उनको बचाने का प्रयास करेंगे और उनको स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे। पुराणों में कहा गया है, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन बहुत वाइड है। शॉर्ट में अगर बताऊं तो पुराणों में कहा गया है कि एनवायरनमेंट का मतलब पंच तत्व, धरती, आकाश, हवा, जल, पानी, हवा, जल और आकाश, स्पेस, ये 5 आइटम है। अब हम अगर एनवायरनमेंट पे बहुत डिटेल में जाते हैं तो लेक्चर ये हफ्तों चल सकता है। तो मैं आज के पर्पस के लिए आपको वो छोटे से 2 आइटम लेके चलूंगा जो मैं महसूस करता हूं कि अगर हम अपनी रोज की जिंदगी में उसको लागू कर सकें और उसको पार्ट ऑफ सोशल साइंस इन प्रैक्टिस बना सकें, तो शायद हम आज की तारीख में एनवायरनमेंट को कुछ मदद कर सकते हैं फॉर इट्स प्रोटेक्शन। क्या है? देखिए, जो आज हमारी कंसर्न है, हमारी नहीं पूरी दुनिया की, वो 3 किस्म की प्रॉब्लम है। एक वाटर पॉल्यूशन,
दूसरा एयर पॉल्यूशन, और तीसरा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा। ये बड़ी भारी समस्या है। पूरी दुनिया में कूड़े के ढेर जितनी बड़ी समस्या बन गए हैं, इनको कैसे हैंडल किया जाए ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगले 20 सालों में ये स्थिति और गंभीर होने वाली। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में कितना कूड़ा पर डे इकट्ठा होता है? 3 करोड़ टन। सॉलिड वेस्ट जनरेशन इन इंडिया एवरी डे इज मोर देन 3 करोड़ टन। और हमारी ट्रीटमेंट की कैपेसिटी कितनी है? 20% भी नहीं, 20% भी नहीं। इसी तरीके से जिसको हम सीवेज कहते हैं या सीवरेज कहते हैं, जो गंदा पानी है, वो चाहे डोमेस्टिक एफ्लुएंट हो, म्युनिसिपल एफ्लुएंट हो, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट हो, किसी भी किस्म का हो। डोमेस्टिक मतलब घरों का गंदा पानी, म्युनिसिपल दुकानों बाजारों में आता है वो, और इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री से आता है। ये टोटल कितना जनरेशन है हिंदुस्तान में? मैं दुनिया की बात ही नहीं कर रहा। 70,000 मिलियन लीटर पर डे, 70,000 MLD इसको हम लोग कहते हैं। एक MLD मतलब 10 लाख। कितना हो गया? गिनती के लिए बहुत जीरो लगेंगे। और इसके ट्रीटमेंट की कैपेसिटी हमारे पास कितनी है? 40% मिलेगी। और इसके बाद भी क्या होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो जो ट्रीटमेंट होकर जल पानी आया उसको फिर से उसी नाले में डाल देते हैं। जिसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं। दिल्ली, आप सब लोग दिल्ली के आसपास रह रहे हैं, एयर पॉल्यूशन से आप लोग डेली वाकिफ हैं, आज भी सफर कर रहे हैं। खासतौर पे ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में खासतौर से हो जाता है। आपने यमुना पॉल्यूशन पर रोज सुना होगा। मैडम नीरा मिश्रा जी तो बस पे बहुत काम कर रही हैं। दिल्ली में यमुना का जल आने से पहले उसका लगभग 80% पानी बैराज से निकल जाए। तो दिल्ली में वर्चुअली यमुना का पानी आ ही नहीं पाता। तो वो ई फ्लो जिसको हम कहते हैं, तरलता, पानी की तरलता, पानी लगातार बहता रहे, वो उसको सफिशिएंट वाटर नहीं मिल पाता। तो दिल्ली जल बोर्ड जानते क्या करता है? यहाँ पे लगभग 450 MLD सीवेज डेली जनरेट होता है दिल्ली में, 450। ट्रीटिंग कैपेसिटी 100 से भी कम है। तो लगभग 370 MLD, ये उन्होंने हमारे यहाँ एफिडेविट फाइल किया था, 370 MLD सीवर का पानी अनट्रीटेड ये सीधे सीधे यमुना में डाल देते। तो हमने पूछा भाई ये यमुना में क्यों डाल देते हैं, इसका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब ई फ्लो मेंटेन करने के लिए। जस्ट इमेजिन कि नदी का पानी, क्योंकि पानी में तरलता बनी रहे, पानी में बहाव बना रहे, इसलिए हम नाली का पानी उसमें डाल देते हैं बिना ट्रीटमेंट के। ये जवाब था। खैर, ये प्रॉब्लम गंगा की भी है। गंगा के बारे में आपने सुना होगा, पिछले 40-45 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट भी प्रयास कर रहा है, अदालतें भी, तमाम हाई कोर्ट प्रयास कर रही हैं। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? देखिए, गंगा का लगभग 30,000 क्यूसेक फ्लो है ऋषिकेश में। क्यूसेक मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। 30,770 समथिंग ऐसा है। ऋषिकेश से आगे गंगा को 4 बैराज मिलते हैं। पहला बैराज उसको भीमगढ़ा पे मिलता है, वहां पे लगभग 8,500 क्यूसेक पानी निकल जाता है। दूसरा बैराज उसे बिजनौर पे मिलता है, वहां पे लगभग 4,500 क्यूसेक पानी निकल जाता है, 8,500 क्यूसेक पानी निकल जाता है। तीसरा बैराज उसे नरोरा पे मिलता है, वहां लगभग 7,500 निकल जाता है। और कानपुर तक आते आते लगभग पूरा 30,000 क्यूसेक पानी गंगा से बैराज में चला जाता है इरिगेशन। तो उसके बाद में गंगा जल है ही नहीं। अब क्या है? as easy as it you can tell it, सीवर का पानी क्या है?
तो हम सीवर के पानी को ही रोक के या सफाई करके सिर्फ गंगा की तरलता को ठीक नहीं बना सकते, हमें उसको पानी भी देना पड़ेगा। तरीका क्या हो? तीसरा एस्पेक्ट सॉलिड वेस्ट। जो लोग दिल्ली घूमते देखा है, गाजीपुर की तरफ से आइए, आपको कूड़े का पहाड़ मिलता है। देखा नहीं देखा? कितने चील का हुए घूमते हैं, है ना? कम से कम 20 लाख टन का कूड़ा वहां पे इकट्ठा है। एक एस्टिमेट है, तो किसी ने तोला तो है ना। ऐसे एक भलसपा पर है, वो इससे भी बड़ा है। गुरुग्राम में वहां और बड़ा है। पिछले तमाम वर्षों से सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हो चुका है इस कूड़े के ढेर को साफ करने के लिए, लेकिन वो रुपया तो साफ हो गया, कूड़ा जहां तक था मौजूद। तो क्या तरीका है कि हम ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जिस वजह से चीजें इकट्ठी हो रही है, सॉलिड वेस्ट क्रिएट हो रहा है, ज्यादा सीवर हो रहा है, एयर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा कम कर सके। अगर कुछ प्रयास हम लोग अपने, क्योंकि देखिए पॉल्यूशन किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये सिर्फ अदालत की जिम्मेदारी नहीं, ये हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो इस वातावरण में जीता है, सांस लेता है और रहता है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी। तो हमें अपने घर से ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे बहुत सिंपल तरीका है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और इंदौर में ये प्रैक्टिस है और वहां हो रहा है। कुछ लोगों को जिनको इंदौर का आइडिया हो, शायद उनको मालूम होगा कि वहां पे इंदौर को कई बार आपने सुना होगा ना कि उसको सफाई में नंबर 1 में नाम का अवार्ड मिला है। तो वहां क्या होता है, वहां पे लोगों में कल्चर इस हद तक चला गया है कि अगर मेड सर्वेंट भी आपके घर पे आए तो कहता है कि मैडम मुझे 3 डिब्बे दीजिए वरना मैं काम नहीं करूंगा। 3 डिब्बे क्यों चाहिए उसे? वेट वेस्ट के लिए अलग, ड्राई वेस्ट के लिए अलग और प्लास्टिक वेस्ट के लिए अलग। फिर क्या होता है, जो उसको कलेक्शन करने आते हैं तो वो जो गाड़ियां लाते हैं उनमें कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, जिसमें ड्राई वेस्ट अलग डालिए, वेट अलग डालिए, प्लास्टिक अलग डालिए। तो वो जो कलेक्शन करने लोग आते हैं वो उनको नहीं देते कूड़े का डब्बा, वो खुद डालने जाते हैं ताकि गलती से भी इधर का कूड़ा उधर ना पड़े, ये इंश्योर करते हैं। और तीसरी, तुलसीदास ने कहा था ना, भय बिनु होय न प्रीति। तो वो पावर जो कलेक्टर्स है उनको दी हुई है कि अगर कोई गड़बड़ करता है सेग्रीगेशन में तो उसको तुरंत 500 रुपए का चालान कर। तो वो अगर जरा भी आपने सेग्रीगेशन में गड़बड़ी करी तो वहीं पर्ची काट के आपको पकड़ा देता है और पैसा ले लेता है। वो भी जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमको भय की जरूरत है। क्या दिक्कत है कि घर में हम इस तरीके की कोई प्रयास नहीं कर सकते? क्या समस्या है? हो सकता है 2, 4, 10 मिनट ज्यादा लगे कुछ काम करने में, लेकिन देखिए उससे होता क्या है, जो मतलब ऐसा हम क्यों करते हैं, हम क्यों सेग्रीगेशन कराते हैं, ये भी जानने की बात। जो वेट वेस्ट होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, वो बहुत जल्दी सड़ जाता है। तो ये जब इकट्ठा किया जाता है और अगर सेग्रीगेटेड है तो इसको तुरंत लेके जो कंपनीज होती हैं जो ट्रीटमेंट का काम करती हैं वो इसको कंपोस्टिंग के पर्पस के लिए गड्ढों में भर देती है सीधे। 7-8 दिन के अंदर वो कंपोस्टिंग होकर इसके कंपोस्ट खाद बन जाती है, और वो कंपोस्ट खाद हमारे खेतों में और उद्यान वगैरह में चली जाती है इस्तेमाल होने। तो वर्चुअली जो ट्रीटमेंट कंपनीज हैं वो इससे कमाते भी। इसी तरीके से जैसे ड्राई वेस्ट है, तो जो रिसाइकिल हो सकता है वो छट के आया, उसको उसी तरीके से जहां जहां रिसाइकिल होना है उन्होंने भेज दिया। और प्लास्टिक वेस्ट अलग अलग से मिलता है, तो कुछ बड़ी कंपनियां हैं जैसे सीमेंट कंपनी है, तो वहां पे वो जला देते हैं, उसको जलाने भेज देते हैं। इसके अलावा कई जगह उन्होंने एनर्जी टू वेस्ट एस्टेब्लिशमेंट्स भी लगाए, यानी कूड़े से वो बिजली बनाते हैं। यही कूड़ा जब जलाते हैं जो जलने वाला होता है तो उससे बिजली बनती है, वहां भी कमाते हैं।
सिर्फ इंदौर में वो मुझे बता रहे थे कि 60 टन कंपोस्ट वो डेली बना लेते हैं और उससे उनको अच्छी खासी आमदनी भी होती है। तो अगर ये एक जगह हो सकता है तो और जगह क्यों नहीं हो सकता? क्या हम लोग कम कल्चर्ड हैं? क्या हम कम समझदार हैं? या हमारे प्रयासों में कुछ कमी है? या सोच में कोई कमी है? कोई कमी नहीं, सब चीज बराबर है। तो अगर सब चीज बराबर है तो हम क्यों नहीं इसको लागू कर सकते? तो अगर आप लोगों में से कुछ लोग या आधे लोग या सभी लोग इस प्रण के साथ आज घर जाते हैं और इसको कल से परसों से लागू करने की कोशिश करते हैं, तो मेरा आना यहाँ कुछ हद तक सफल होगा। इसी तरीके से दूसरी बात आती है सीवर की। देखिए, सीवर में हम और आपका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ये म्यूनिसिपैलिटीज का, लोकल बॉडीज का काम है, ट्रीटमेंट उनको करना है। लेकिन हाँ, इतना तो हम कर ही सकते हैं कि ऐसी चीजें हम नालियों में न डालें जो सीवर को चोक करे, उसके नॉर्मल फ्लो को रोके और उसके ट्रीटमेंट को या प्रोसेसिंग को दिक्कत करे। आपने तमाम जगह देखा होगा, हर किस्म की चीज, कुछ नहीं तो चिप्स खाए तो चिप्स का पैकेट भी उसमें डाल दिया। तो ये तो हम रोक ही सकते हैं। आप लोग कई जगह जैसे रिजर्व फॉरेस्ट सवारी वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे लोग इतने कॉन्शियस होते हैं कि अगर एक टुकड़ा भी कहीं आप डाल दें तो पता चला वो टैक्सी वाला या जो वो होता है वो उसको उठा के सेपरेटली अपने अलग रख लेता, क्योंकि वो कमिटेड है कि हम गंदगी नहीं होने दें। तो सीवर के मामले में जो हम कर सकते हैं वो सिर्फ इतना तो कर सकते हैं कि ऐसा अनवांटेड सॉलिड मटेरियल जो सीवर में अदरवाइज ट्रीट नहीं हो सकता, जिससे सीवर रुकता है, उसको बचा सके। अगर वो बचेगा तो सीवर लाइन बहुत आसानी से चल सकती है। सीवर की जो रियल प्रॉब्लम है वो आती है एक्चुअली इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का जो पॉल्यूशन होता है वो केमिकल वाला होता है और उसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है। तो अब जैसे आपने सुना होगा एसटीपी लगे हुए, ईटीपी लगे हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीईटीपी, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज वो अपना ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकते तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज का एक कंबाइन बना देते। लेकिन वहां पे जो रियल प्रॉब्लम आती है वो आती क्या है कि कॉमर्शियली थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो कॉस्ट फैक्टर बचाने के लिए वो उसकी फंक्शनिंग को नहीं होने देते। हम और आप उस लेवल पे खड़े हैं जहां कल हो सकता है कुछ इन्हीं इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करें, इन्हीं एस्टेब्लिशमेंट्स को ज्वाइन करें, या हो सकता है हम खुद वो स्टार्टअप हो जो हम खुद इसको लागू करें। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसे प्रयास कर सकते हैं कि भाई एनवायरनमेंट की कोई कॉस्ट नहीं, क्योंकि ये बेशकीमती है। हवा अगर खराब हो गई, अभी 2 साल पहले जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई थी तो आप लोगों ने देखा था कि क्या हुआ, किस कदर त्राही त्राही मची थी। इसी दिल्ली में, यहीं गौतम बुद्ध नगर, यहीं गाजियाबाद, कौन सी जगह थी? और क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम ऑक्सीजन देने वाली जो हमारी चीज है पेड़, उसको तोड़ने काटने में 1 मिनट नहीं चलता। क्या आपको मालूम है ये पेड़ हमको फ्री की ऑक्सीजन देता है? और सुप्रीम कोर्ट ने एक पेड़ की कीमत निकालने के लिए एक बहुत हाई पावर कमेटी बनाई थी। तो उन्होंने उसके सारी चीजों को डिस्कस करके ये निकाला कि अगर एक पेड़ की कीमत निकालने हैं तो लगभग मान लीजिए उसकी अगर 10 साल का पेड़ है, 10 वर्ष की उम्र हो गई, तो 76,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए। अब उस केस में मैं आपको बताऊं करीब 5,000 पेड़ काटने की परमिशन मांगी गई थी, जो जब सुप्रीम कोर्ट ने कैलकुलेट किया तो कई हजार करोड़ रुपए का पेड़ों की कीमत आ रही थी। तो वो सब चौंक गए, पर उन्होंने उस मैटर को आगे के लिए डेफर कर दिया, वो पेंडिंग है, तय नहीं हुआ है।
क्योंकि वो ये नहीं समझ पाए कि हम इस कॉस्ट को फाइनल करें कि ना करें। लेकिन जस्ट इमेजिन, वो पेड़ जो हमको फ्री में उपलब्ध है, उसको हम मन मर्जी से नुकसान कैसे भी पहुंचा देते। तो अगर मैं ये नहीं कहता चिपको मूवमेंट की तरह से आप पेड़ के चारों तरफ खड़े हो जाएं कि भाई काटने नहीं देंगे, पहले मुझे काटो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अपने प्रयास ऐसे कर सकते हैं कि जहां संभव हो पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं। ऐसे पेड़ लगाएं जिनका 10, 20, 25 साल में हमारी जनरेशन्स जो है वो उसका इस्तेमाल कर सके। हमारे पास आज पेड़ हैं, वो हम लोगों ने तो नहीं लगाए, हमारे पुरखों ने ही लगाए होंगे, तो उन्होंने भी इसी तरीके से सोचा, हम भी ऐसी सोच सकते हैं। बहुत सिंपल बात है, बहुत नॉर्मल बात है। हम रोज फोटो खिंचाने ले तो पेड़ लगा देते, फिर पूछिए कि साहब भाई साहब ने पेड़ कहाँ लगाया, तो मालूम ही नहीं कहाँ लगाया। वो जिंदा भी है कि नहीं मालूम नहीं। अभी परसों मैं आपको बताऊं, दिल्ली के एक बहुत बड़े मैटर में, जिसमें बहुत बड़ा बंगला अभी बना था, उसमें 19 पेड़ ट्रांसप्लांट करने की परमिशन दी गई थी। समझे आप? उसकी जांच हमारे यहाँ चल रही है। उसकी रिपोर्ट ये आई कि 19 पेड़ उन्होंने कहा हमने ट्रांसप्लांट कर दी। जब हमने जांच कराई तो पता लगा 11 पेड़ तो मर चुके हैं, 7 पेड़ों का पता ही नहीं। सिर्फ एक बरगद का पेड़ जो है वो कहीं जिंदा मिला। और ये पेड़ 50-50, 60 साल, 70-70 साल के थे। अगर उस कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से उनकी कॉस्ट सोची जाए तो आप सोचिए कितना नुकसान हुआ है। और ये तो मॉनेटरी टर्म्स में है, जो हमारे नेचुरल और एनवायरमेंटल टर्म्स में है वो लॉस तो अनकंप्यूटेबल है, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हमें रोज जरूरत है। आज हम एक नया पौधा लगाएंगे तो 10, 20, 25 साल में उतना बड़ा होगा जब हमको बहुत बेनिफिट देगा, तब तक तो समस्या बहुत हो जाएगी। अब मान लीजिए जब कोविड-19 आया था और ऑक्सीजन के लिए उस समय पेड़ लगाए जाते तो उससे कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रयास हमें निरंतर बनाए रखने हैं। देखिए बहुत सारे शब्द आप सुनते होंगे एनवायरनमेंट के मैटर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉल्यूटर्स पे, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड सो ऑन। ये लीगल टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको इसमें उलझाऊंगा नहीं। ये भी बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब भी विकास होगा तो एनवायरनमेंट का नुकसान होगा। एक दीवार बनाने के लिए जमीन खोदी तो टॉप सॉइल का नुकसान कर दिया। टॉप सॉइल क्या होती है? जो जमीन पर ऊपर की मिट्टी होती है जिससे पेड़ पौधों को उनका भोजन मिलता है, वो जैसे हमने खोदी तो वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के साथ भी बेकार हुई। ऐसा कहा जाता है साइंटिफिकली कि अगर किसी डैमेज टॉप सॉइल को रिकवर करना हो तो 100 साल लगते हैं, 100 साल। अब इसकी कॉस्ट कैसे वर्कआउट हो सकती? तो डेवलपमेंट पर हमेशा एनवायरनमेंट का नुकसान होता है, लेकिन डेवलपमेंट भी जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी दोनों साथ साथ चल सकें। लेकिन दोनों कैसे साथ साथ चल सकेंगे, कैसे तय होगा, इसका कोई यार्डस्टिक नहीं है। ये तो जज की आंख में है, वो जिसको ठीक समझे कि ये सस्टेनेबल है तो ये सस्टेनेबल है। उन्होंने कहा डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी था, वो है। अभी जैसे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी तो माना गया भाई वो बहुत ज्यादा जरूरी थी, ठीक है भाई, तो ग्रीनरी थोड़ी कम हो गई। यही तो हुआ कि नहीं हुआ? तो ये डिपेंड करता है, इसमें कुछ वो नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि हम ये तय कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे हम जो जहां बहुत क्रूशियल फर्टाइल लैंड है उसी को क्यों खराब करें? एक बात बताइए, क्या वजह है कि दिल्ली में ही पूरी सरकार रहती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता ये भी डिसेंट्रलाइज हो जाए? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का दिल्ली में क्या ऑफिस में क्या काम? कौन सा पानी का जहाज दिल्ली आता है? बताइए, आता है? तो क्यों नहीं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है किसी और जगह शिफ्ट हो जाए, थोड़ा लोड यहाँ कम होगा। बहुत सी ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ खाली लैंड है, बैरन लैंड है, जहाँ पे आप अपना ऑफिस बना लें, यहाँ की ग्रीन लैंड बचेगी, फर्टाइल लैंड बचेगी। ऐसा नहीं हो सकता। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारे पास जो टेक्सटाइल हब है, हम उनको छोड़कर सब दिल्ली आगे बढ़ जाते हैं। क्यों?
इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं कि अगर डिसेंट्रलाइज करें तो दो काम होंगे, दिल्ली का लोड कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, और दूसरे जो हमारी फर्टाइल ग्रीन लैंड है वो भी बचेगी। वरना अभी तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो दोआब का इलाका है, गंगा जमुना के का फर्टाइल एरिया है, उस पर जितनी हरी भरी लैंड है उसको खत्म किए दे रहे। तो ये भी तय करना हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे एनवायरनमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करके अपना काम चला सकते हैं। डिस्टेंस आज के समय में कोई मायने नहीं है। और फिर अब तो हमारे पास वर्चुअल मोड भी है, हम कहीं से भी कोई बातचीत करनी हो वर्चुअल मोड से भी कर सकते हैं। तो अगर इन सब चीजों का एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके तो ठीक है। और अगर हमें यही है कि भाई हमें तो रोज हाजिरी देनी है दरवाजे पे, तो इसलिए हमें यहीं रहना है, तो बाकी सारे कंसेप्ट तो सिर्फ बात के रह जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब बहुत सी मीटिंग होती हैं तो मीटिंग का मतलब मीटिंग, ईटिंग एंड चीटिंग, बाकी काम वाम उसमें होता नहीं। और रंगनाथन साहब ने जैसे आपसे बताया था, देखिए जुडिशरी की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हैं, इसका कोई दो राय नहीं, ओपन सीक्रेट है। 4.5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 4 करोड़ 10 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग, इसमें सिर्फ यूपी में 1 करोड़ 5 लाख, सिर्फ यूपी। 60 लाख से केसेस ज्यादा केसेस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। इसमें जजों की वजह से कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी एरियर्स कमेटी का, मैं हाई कोर्ट का चेयरमैन था इलाहाबाद में। मैंने उसमें ये रिकमेंड किया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैसे पेपर पे स्ट्रेंथ 160 जज की, लेकिन 160 जज वहां काम कर नहीं सकते और आज तक कभी हुई भी नहीं। मैंने उस रिपोर्ट में लिखा था, जस्टिस चंद्रू साहब हमारे चीफ जस्टिस से, उस समय उनको दिया था कि इफ वी कैन हैव जस्ट 90 वर्किंग जजेस तो बाकी काफी है, और यहाँ 500 की स्ट्रेंथ करने कोई फर्क नहीं। तो जजेस के नंबर से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 1,40,000 केस तय कर सकता हूँ 14.5 साल में, तो और लोग भी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मैंने कुछ अलग काम तो नहीं किया, मैंने सिर्फ वही काम तो किया जो मुझे करना चाहिए था। सब लोग कर सकते हैं। मुझे 3 साल, 3.25 साल एनजीटी में आए हुए हैं, यहाँ भी हमने 20,000 केस तय कर लिए। तो अगर आप काम करना चाहें तो आपके पास सारी सुविधा है, और काम ना करना चाहें तो आप ऑफिस को भी एंजॉय कर सकते हैं। बहाने बहुत हैं, करने की इच्छा में सिर्फ एक ही काम है, कर डालिए। सोचिए मत, पूछिए मत, बताइए मत, भाषण मत दीजिए। तो मैं भी अपने भाषण को इसीलिए यहीं पे खत्म करता हूं, और आप लोगों से अगर जो मैंने बताया है, अगर उसका 2% भी रिटेन होता है और आप उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह से इस्तेमाल करके कहीं ले जा पाते हैं और कुछ करते हैं, तो इतना ही मेरे लिए काफी होगा। धन्यवाद। Thank you, sir, for your insightful perspectives. Really thought-provoking words were spoken, and we are really grateful to have you here today. Can we have a huge round of applause for Justice Sudhir Agarwal? I would now like to call Dr. Prashant R. Chauhan, the brilliant mind steering the ship of ICSS, Conference Convener ICSS 2024, Coordinator of the Department of Social Work at Amity Institute of Social Sciences, for a report, reflection, and a vote of thanks. Thank you so much. I think what Justice Agrawal said, that when you speak at the end, and definitely when you have planned something and something has realized, and feedback we'll take later, how was it 2 days. But as per the blessings of Honorable Founder President Sir, his vision was always that social sciences is one domain which has lot of scope actually, and with that vision he started Amity Institute of Social Sciences in 2009, and even in 2006 actually, and then afterwards in 2009 these courses full-fledged AISS has formed, and then afterwards, as per his vision, we are working continuously, and with the obviously blessings of our Chancellor Sir, who is extraordinary person, a global personality in current times, visiting and establishing universities across the world, with his vision also, and
with definitely patronage and guidance of our Honorable Vice Chancellor, ma'am, who is a source of inspiration for us, the continuous workaholic women who handles the university at a level where all the progress is happening in the current tenure. And our very young and dynamic director AISS, Professor Nirupma Prakash, who is definitely, a backbone of all of us, those who are doing anything. Her motivation and, that punctuality, discipline, everything motivates us to work. And this is the result that we are doing this international conference on social sciences today, which is about to end, and which I believe that, as per the feedback of many and messages I am getting, that we have done some job which is appreciated by the participants. Moving further, yes, thank you. And moving further, if you see the idea behind this conference, I just want to reflect on that very quickly. That in the university, always, social sciences uh, institution is one of the institution which, whenever extension activities are being discussed or any NAC information is being asked. So ICSS is one institute which always, take lead and provides the activities and certain informations on that. And definitely this conference was planned in this manner that when we say Amity University is a research and innovation driven university, so we should also contribute not only that management, law and engineering and other programs, but social sciences may also we should, invite research scholars, academicians, practitioners, NGOs, and other development practitioners, civil society organizations, and government officials, so that we can have joint, deliberations, and we can come up with the proceedings where we can contribute in the, our vision of Honorable Prime Minister 2047 of a developed India, and our founder president, that Amity at 2047, where we are leading our institution, our Amity University in that. So I think AISS, this conference, international conference on social sciences, will play very important role. And I'm very thankful to all the organizing committee actually, who have, given their contribution. And we have included all these streams of AISS, from geography to political science, history, sociology, philosophy, social work, development studies, and if I'm missing, I think one or two more. So we have included every, and even we have included the ethics and human values also in that, because this also course is being coordinated by AISS at university level. And then afterwards, this conference we have received very good response from across the world, I will say. I was just looking out the data, around 44 universities have, students, scholars have participated in this conference. So which is a very appreciating number. And not only in India, but from 6 foreign universities also. So that was very appreciating, and we were very overwhelmed. And the quality of research papers, I was talking to the chairs, session chairs, and those who were doing that, they have given very excellent feedback that the quality of research papers were very, very nice. The very high quality papers were presented, and all the research scholars and even the professors of various universities, if I say social work, so from Nirmala Niketan to University of Lucknow, Delhi University, Jamia Millia Islamia, AMU, various central universities, even including IITs and IIMs, we have received papers from all these. So this kind of representation happened, and around 92 research papers were presented. Some were rejected because of full not paper submission and various reasons. Percentage always, little bit rejection is there because we can't compromise with the quality. And then afterwards, we also planned lot of during these 2 days discussions, panel discussions. So we also collaborated with the Kailash Satyarthi Foundation, Children's Foundation, for
child marriage, panel discussion on child marriage, in which very commendable, very excellent speakers were there as a panelist. We had NGO Leaders Forum, in which 8 states NGO heads came all the way from Assam, from Jharkhand, from Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, and many other states. And they were here to interact with the students. They shared their personal experiences about their interventions, initiatives, projects which they are doing, and they invited our students to come and join their block placement, summer internships, and various other final placements also. So I think in that context, that was wonderful opportunity where, because being a social sciences, this is one area where NGOs are our very close partners, collaborators, and they have contributed a lot. After that, we also collaborated with the Center for Social Research, which is a credible organization in terms of research on gender issues. And we had a very special session on artificial intelligence and digital age, empowering women and children, and on the topic of artificial intelligence. So that was excellent, where use of social media, how AI is helping or curse or boon. So that was very nice, with excellent panelists we discussed. After that, we had one also panel of women entrepreneurs, and there is an organization called Women Listed. That organization coordinated that in partnership with us, and 5 very excellent women entrepreneurs came, and they shared their journey, that how they have initiated and what are the challenges they faced while starting their journey of entrepreneurship. After that, we had international students panel, which was joined with Amity students and the international students. It was on the role of social global development, youth, and all this. And then afterwards, we had cultural discussion, cultural presentation of students from Burma and Myanmar and Afghanistan, and that was very well appreciated by all the participants. Then afterwards, today morning also, we had again a book launch, Just Right, and in which around again 25-30 NGOs representatives came, and some lawyers came, and other civil society organizations were here in the morning. And we had a very good book release launch program, this book discussion. And then afterwards, we had a paper presentation also in a hybrid mode. And after that, we had 2 panel discussions today, very, very important panel discussions. One was on social work, paving way in Viksit Bharat, and another was on Indian knowledge systems, in which Professor Anand was here. And then afterwards, we also had various other activities during the conference, where we motivated our students to interact with the stakeholders, those who were here. We have Association of Uttar Pradesh of Social Workers in Uttar Pradesh President Mr. Rizwan Ali also with us, who is a partner organization in this, and a big clap for him. Actually, he works with the Labor Department and as a child resource coordinator, and he's an excellent personality working for child rights and child labor and construction workers. And then I want to acknowledge the support of the Indian Social Science Association. They also helped us, supported us, and in organizing this conference as a knowledge partner. And then Kailash Satyarthi Children's Foundation definitely came forward and supported us in organization of this conference. And then afterwards, I also want to mention Gas Authority of India Limited, GAIL, because they also came forward and helped us in some or the other way in sponsoring our program
in conducting this. So I am very thankful to the corporate communication department and the HR department and CSR department for helping us. I want to acknowledge Gas Authority of India Limited. I also want to mention the help of support of Dainik Jagran as a media partner. They also came forward and helped us in as a media partner. So they are also covering, and they have given us the thing that in future also they will take up social issues and with the social sciences institution, and they will take involve the students in their CSR projects further. Moving further, if I say that conference was, a dream which comes true, is something which is happening. So excellent opportunity for us, and I this conference behind. Maybe you are looking at me, but there are a lot of champions behind this conference. Those who were working day night. Actually, I can say day night. So I want to call two special volunteers and a big clap for them, Japneet and Mohini. I'm sorry. So these two students were, very much working and continuously, because the students come and go. They come sometimes, then they say, okay, yaar, ab main thak gaya. But I appreciate their, sincerity that day night they were continuously working. We have WhatsApp group where at whatever times we have this lab, that lab, because you can imagine that when we have 8 panel discussions, 92 research papers, lot of inaugural, valedictory, various activities. So they were like my right and left hand. And apart from, I want to acknowledge Dr. Rama Srivastav's contribution actually. A big clap for them. So Dr. Rama Srivastav was, a real friend, you can say, a colleague, who is always there, whether her name is there or not. So I want to, acknowledge you, Dr. Rama, that you're always there. And I also want to, acknowledge my faculty colleagues, those who are here, Dr. Rahul Bhandare, very calm person, and Dr. Bhavna is here, and uh, she was is always, sometimes you have a team actually. So whatever you do, always certain people are with you. So Dr. Bhavna is also here, and many other faculty members. I want to acknowledge all the organizing committee members, those who were part of this, and many people I know. Maybe some of you were thinking, so why taking 2 names only? But there are n number of students. I want to acknowledge them, because I remember 4 students, we all went to Karol Bagh to explore the kit and the mementos and various other things, that what should we give. So I acknowledge all those, especially Uwais, Rayan, Hamza, Durrani, and Yazdan, and all other students actually. Those who were working continuously, not looking at time, not looking at ki kya kaise hai, but they were like ki hame karna hai. I also want to acknowledge one girl, Yusra Viraj. Though she was not able to, sometimes you try, certain things don't happen. But certain people are those who are always with you and always, works. So Yusra is that. So I also want to acknowledge Yusra. And I want all the volunteers, because if I'll take the name, the time is already over. And there is one name, I forgot. Thank you. Satya. Satya is behind that. Come forward. Come forward. Satya is one student of BA Political Science who has, very humble, but I have no words to explain actually. Never say no. You give him a task and he is there. So all the creatives which you are looking at, all the posters of speakers, valedictory session, he has created, very creative and very dedicated. In the night, I messaged photo and poster, and in 10 minutes, I am receiving a poster. So this kind of dedication, actually, we were able to do it. And I also want to acknowledge all the people, those who are doing photography, those who are arranging hospitality, Varanya Vaibhav, Augustine Aji, Karuna,
and others, those who are here, registration team, everyone actually. Sorry, student, don't mind if I am not able to take everyone's name, but you know that I acknowledge you, and without your support, it is not. And always founder says that the student conference or any event should be a student's event. I'm telling all the members on the dais that this conference was by the students actually and for the students. So they were behind this. They have given idea. Dr. Ranganathan was here. Dr. Ranganathan, Moini has recommended name, sir. We want him. And then we contacted and many other panelists. So everything they have planned. And I think this is the objective of this conference, that we should do it for the students, and definitely from during this only they were planning for the 25 also, that what will be next year, how big we are going to do it. So this kind of passion our students have. So I really appreciate everyone, all the PhD scholars also. Those who have contributed, I want to acknowledge Irene, Sanidhya, and any other, those who are, I'm not taking name, if I have contributed, all our partner NGOs, those who are our fieldwork agencies, all our IT department for making wonderful website, our administration department for helping us in coordination of venue, food, and every other thing. And I also want to acknowledge security department, RS Varedra sir, for helping us in movement of lot of guests, lot of people, NGOs, and supporting them and taking trouble many times. I also want to acknowledge the support of hostel, guest house team, and the Vice Chancellor's office, that for helping us, guiding us, providing all the necessary support in organization of this conference. At the last, thank you. And I also, want to say that sometimes you do certain things and people are not. There are many people who are messaging me, really, many good people, that the viral is going on and they are unfortunately not able to come. Some or the other. So there are certain we can understand. But I also want to acknowledge, especially Justice Agrawal. Actually, he's so kind. Please give very clapping for him. He never says no. Actually, he's so positive. He's so energized. Actually, after talking to him, I always get energy. That sometimes you motivate yourself. So he's that person, and I called him, and he was in Kolkata, and then he happily agreed, and then he's here. And I know that kind of person he is. He has a lot of assignments. Member of NGT is something where he is performing. He is a renowned, judge and justice. So a lot of things he is doing, but he is here. And because of his love with the interaction of youth and students, I want to acknowledge, Asha ji. Actually, Asha ji is another, you can say, what to say, a mentor or a family actually, or a always a friend kind. He always, whenever you say she's here, so she's trying to establish and work like an NGO, and we will collaborate with her, and we will do various activities what you are doing. Our students will take forward. I'm assuring you. And being an assignment, being a wife of a senior person, I know that she has to be engaged in various things, but she has contributed. I want to also mention the special appreciation to Miss Neera Mishra ji, with whom I have learnt a lot actually. Sometimes you learning by doing. So Neera Mishra ji is my learning by doing, and we work together. I volunteered for her for many years actually with her during my college time, and whatever you learn, see organization and everything. So she is one of the guide in that. So clapping for Neera ji also, and she works for on many very nice issues. At the end, One thing I want you to announce, the students environment की आज बात हुई है. We have taken a 3-year project that in 3 years, in fact, we have tied up with NCC for 1 year for preventing pollution by the society.
जो आपने बात कही, because we can't go and do anything what the government is supposed to do. So our action is awareness, advocacy, and action. So in this awareness, advocacy, and action and awareness may, if the students can become a part of it, the whole of NCC, all India is involved in this. So we would like to offer that if you can join us also in this effort, because we are all affected by Ma Yamuna's pathetic condition. And I think once we all get up together, Justice Agarwal ji will pass the order much faster than he is planning to do it. No, we will do, and I'm just adding what Neeraj is saying. Our students are already continuously doing cleanliness drives in Yamuna Bank. They are going on Sundays, Saturdays, whenever the holidays are there. So they are contributing, and whatever you are saying, our students are so active, they will definitely join you. At the end, I am not taking much time. All the research scholars, those who are here, thank you so much for coming. I know that you were continuously trying, approaching, messaging, presentation कब है, कैसे है, हमारा certificate कब मिलेगा, हमारा schedule क्या है, and our all these volunteers have done good job in that. So you will get certificate अभी very soon यहीं से. And at the end, I want to acknowledge our sir who is from MIT University Administration, who is here. Thank you, sir, for coming, Kamlesh sir. And he is outcome based. This university is outcome based. Actually, whatever we do, there should be outcome. So maybe we will get an email from sir soon that please provide outcome of this conference, and we will do that. Captain Shukla sir, yes sir. Ji. So, and then afterwards, I also want to, at the end, acknowledge the hamari vigilance team and IT support and media department, all the people, those who have, continuously supporting us in organizing this, and all the guests, all the people, those who are attending 2 days conference, NGO representative, thank you so much. Now, at the end, students, clap for yourself in a nicer way. And I say that this conference next year, if all set and goes well, we will again do in a much bigger and extensive manner, and we will cover more areas of social sciences which are not covered. So thank you so much. And then afterwards, now I request the volunteers to facilitate the guests. Thank you, sir, for the vote of thanks. Now, I would like to request Professor Dr. Nirupma Prakash to felicitate our guest of honor, Justice Sudhir Agarwal. Now, I would like to request Dr. Prashant R. Chauhan to felicitate our guest of honor, Ms. Asha Bhadoria. Now, I would like to request Dr. Prashant Chauhan to felicitate Ms. Neera Mishra. Can be better than your own. Many congratulations for this wonderful work. Thank you. Thank you, everybody, for being here. Now, I would request all the guests and delegates to proceed for high tea.